Namaste sabko. Sat Sri Akal, Adab, good evening. This is Ekta Sehgal, founder and chief strategy officer, Motherhood Club. Along with me is co-founder and chief happiness officer, Ila Pachari. Good evening, Ila. How are you doing? Good evening. I'm doing great. It's our anniversary month, so I think every day of this month is going to be a very beautiful one, a very happy one. Amazing. Thank you very much. So before we go ahead, let's just wait for a few of our members, friends to join in. What do you say? Absolutely. 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 Right? In the meantime, anything that you want to keep sharing, keep talking. Of course, yes. Till others join us. हैशटैग आए हैं मदरहुड के ऊपर सबका सपोर्ट सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए हमको लगना चाहिए कि मदरहुड क्लब की 5th बर्थडे है वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड a few beautiful tributes, a few beautiful posts where our sharers, our participants have really shared their innermost feelings with regards to Motherhood Club. और आज कमल जी की जो एक पोस्ट थी जो बहुत अच्छा उन्होंने एक भजन को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है ठुमक चलत रामचंद्र की उसके ऊपर उन्होंने मदरहुड क्लब का बनाया है तो मम्मी एकता और मासी इला और मोनिका so that's a very beautiful thing to say, that's a very beautiful thing to realize and feel proud. बहुत अच्छा लग रहा है Absolutely. और Absolutely. February is the So, month of love. So yes, मुझे एक indeed. चीज कहनी है love. February is the month of love. It's the month of sharing, showering love on one another. But it is also a month to share love with yourself. And with that, we come to a very important day today. Today is World Cancer Day, where Well, if we don't love ourselves, we cannot succeed as a society. true. Indeed, World Cancer Day, 4th of February. Why do we celebrate or why do we talk about such a day? A day dedicated to a disease which makes all of us uneasy, uncomfortable, scared, frustrated, not just the patient, but also the caregiver. And for the last 2 years, and I think this is the third year running, the theme for Yes, World Cancer Day is Close the Care Gap, which could be interpreted, perceived in many different ways. कि कैसे आप जो केयर कैंसर पेशेंट्स को चाहिए या जो केयर गिवर्स हैं या जो ट्रीटमेंट पेशेंट्स को मिलता है उसमें जो गैप्स हैं be it gap in terms of knowledge, in terms of the financial requirement, in terms of general awareness, in terms of how to keep your own self healthy, happy, and fit. As Ela said, love is not just to shower on around people, on your children, on your parents, your spouse, your friends, but for your own self. Because as they say, what you manifest is what you get. If we manifest absolutely. stress, if we manifest uneasiness, you're uneasy, that is why the disease is coming to you in the form of all your negative emotions. So we need to let those negative emotions go. We have been talking a lot of about mental well-being through our Thursday thoughts. We've spoken about depression. We are speaking about stress currently. We've earlier also in the past spoken about it. In fact, there was a full month series that Ela had done about care for the caregivers. तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ पेशेंट को ही नहीं जकड़ती है पर वो हर एक उस जने को जकड़ती है जो उस पेशेंट के साथ हैं उनके आसपास हैं starting from the patient to the caregiver to the family members to the doctors nurses just about everyone is so uncomfortable with this disease, and yet so little is spoken about it, so little is done about it, which is very, very unfortunate.
Motherhood Club for the last, I think, 2 or 3 years has been talking about cancer, has been creating awareness around cancer with the help of Dr. Indu Bansal. And yet, tomorrow evening, again, she will be live with all of us to talk about how we can prevent cancer, what all we need to do, and it is preventable. यू नो Yes, अनफॉर्चुनेटली ला हम कहते हैं ना हम सब लोग बहुत ही रिएक्टिव हैं हम प्रोएक्टिव नहीं हैं और प्रोएक्टिव की जगह yes, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जिसके बारे में हमने लास्ट लाइफ पे भी बात की थी और हम इस बार हमने फ्राइडे फंडा में भी उसके बारे में बात की थी कि हम yes, प्रोक्रेस्टिनेशन तो हर चीज के लिए करते हैं चाहे वो हमारी खुशी हो हमारी हेल्थ हो हमारा काम हो यू नेम अ थिंग एंड वी आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग अबाउट इट एंड फिर जब उसके नतीजे हमारे सामने आते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं तो बजाय ये कि हम फ्रस्ट्रेट हों प्रोक्रेस्टिनेट प्रो रखिए कैस्टिनेट को हटाइए और प्रोएक्टिव बनिए ना कि रिएक्टिव proactive बनिए बनिए। प्रोएक्टिव बनिए जिससे कि मतलब है कि आप अपने हेल्थ चेकअप्स कराइए छोटे छोटे टेस्ट होते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं वेरी सैडली इला अगर आपने कल की न्यूज़ पढ़ी होगी अ यंग लेडी एज 32 she passed away because of cervical cancer. We all know that lady. We may say that the kind of profession she had and so on and so forth about her. But the point is, we still don't know if she was proactive to get the vaccination done, whether she was getting herself regularly screened or not. And it is not just her, but many of us who may have ignored the vaccination of cervical cancer, who may Yes, not go for a regular pap smear test. For men, PSA, because prostate is a very common form of cancer for men, PSA yes, test, or general screening. Know the history of your family. क्या आपकी हिस्ट्री है आपके अपने बॉडी के क्या सिम्टम्स हैं अगर हम इन सब चीजों के बारे में बात करें तो क्या कुछ नहीं हो सकता है absolutely. um, it's fake news monica even if it is a fake news I'm not going to validate the news but the point is that maybe that name came and it came in the public domain because she's a celebrity positive or negative So let but since you brought this topic up, she created this rumor to create awareness about cervical cancer. Her action is totally deplored because she has disrespected so many cancer warriors. But having said that, let's come back to our original this thing that unless and until we are proactive and we love ourselves, let's not keep pushing our medical checkups. Health is above all, isn't it? हेल्थ इज अबव ऑल हेल्थ के मामले में प्लीज मत कीजिए कि मेरे को कल करवा लेंगे ब्लड टेस्ट या अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ या ट्रैवल कर रहा हूँ या बच्चों के एग्जाम्स हैं अगर आपको हर 6 मंथ्स में स्क्रीनिंग करवानी है तो आपको करवानी है अगर आपको आज अगर हम कैंसर की ही बात कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली इट्स सच अ व्हाट टू से deadly name term. Nobody would like to shake hands with it or rub shoulders with this disease. बट कहीं ना कहीं हम लोग वही जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि फिर करवा लेंगे बच्चों के एग्जाम्स हैं पेरेंट्स अभी आए हुए हैं गेस्ट्स हैं मेरी कोई कॉन्फ्रेंस है मैं नहीं अभी टाइम नहीं निकाल सकती या निकाल सकता वहीं पे ये गड़बड़े ज्यादा होती है तो अगर also हम ila टाइम से यस let me जी add बोलिए या क्योंकि हम पूनम पांडे के बारे में बात कर रहे थे क्वेश्चन इज दैट फर्स्टली इट इज नॉट अ फेक न्यूज इट वाज अ वे टू कम्युनिकेट that cervical cancer can also lead to death. Hence, we cannot say it was fake. It is in corporate form or in marketing. Many a times, you portray the crappiest of the ads just to create that recall and recognition कि हाँ यस ये आपको वो सबसे गंदी सबसे भद्दी एड इसलिए याद रहती है क्योंकि आपने उस पे नाक मुंह चढ़ाया था कि अरे ये कैसी गंदी सी एड है इसका क्या है बट the everlasting impact that it leaves on any one of us is forever and that is यस exactly what was done here I was coming to that but anyhow
Mm. Yes, it is very important. Then the reason that I brought it up is that we react. Many people, I had a chance to speak to many people yesterday who immediately wanted to go and get the vaccination done. That was the impact of that news. Yes. Fake, not fake, fine. God bless her. She's alive, which is good. And for any other woman who may be a victim of this, or a man for that matter, the illness does not see a gender. So we have to be very, very conscious about our health. We have to close that gap that exists. हमारी जिंदगी कहते हैं ना, it's a slip between the lip and the cup. That's exactly how life and death is. They are the sides of the two coin. Today you are there, tomorrow you are not there. Why wait for that moment? Why not be proactive? Why not prevent ourselves from all these illnesses? Having said that, unfortunately, 1 in 4 people are a victim of cancer, and the way it is spreading like a pandemic, or whatever term you want to give it, it's not even a pandemic, it's become epidemic now, that everywhere. And it doesn't catch only the poor or only the rich. It can catch anyone. Of course, आपकी genes mutate करते हैं over a period of time. We all have those cells. Our eating habits, our health, everything determines that. But point is, कई बार फिर भी हो जाता है। कई लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, येट वी आर अ विक्टिम ऑफ इट। तब हमें क्या करना है? That becomes even more important. What do you say, Ila? Does that equally become important? तब उम्मीद का दामन थामना चाहिए। बिल्कुल, होप, फेथ, उम्मीद। होप, ट्रस्ट, ये चीजें जो हैं, ये सबसे बड़ा काम करती हैं in bringing any person out of the deadliest of diseases, and cancer is no exception. मोनिका टंडन कह रही हैं कि कैंसर का नाम ही लोगों को डिमोटिवेट कर देता है। बिल्कुल। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको जब ये बीमारी होती है तो वो ऐसे बाउंस बैक करते हैं दैट दे बिकम एन इंस्पिरेशन और for others। one and many. And we have a few members on our very own platform who are that inspiration, who have either fought it or are still fighting it. And I would like to name at least 2 people because they have come up in the public domain on our platform. I will not name the others. It's best that they talk about it. But Manjeet Rajbir ji, read her book Back to Life and understand what she went through and how she dealt with it. Rashmi Mehta Longyani, a stage 4 breast cancer survivor. Look at her post. Not only is she positive, fighting it, getting herself cured, but also at every step, she's creating that awareness for other people to deal with this situation. Very, very sorry to hear that, Shweta. Our heartiest or heartfelt condolences to the deceased. And may God give them the strength to deal with this loss that they have in their family. But can we all be supportive? Can we all create hope? Can we all offer that चाहिए। warmth? Yes, Mukesh ji, Santosh Kumar Ogra ji is another example. Not only is he battling that disease, he is motivating so many people who are in their second innings. We all know that he's been on our platform. Thank you for reminding me about Santoshi. We've also lost a few members on the platform to this disease. Eli, if you remember, someone who came here shared her journey of how she was fighting, but God had some different plans for her. But while she was struggling, she was positive, she was motivating others. And it, it gives you faith and hope कि उम्मीद है। और इसी उम्मीद को जगाने के लिए 1 साल पहले, लास्ट ईयर, आज ही के दिन 30 Yes। poets come together to share their poetry of hope.
एक उम्मीदों का इंद्रधनुष बनाया गया था 30 पोएट्स के साथ आज, और उसके बाद 71 more poets had joined to create that beautiful bouquet of hope, जिसका नाम था उम्मीदों का इंद्रधनुष. A poetry anthology, 101 poets across the country. From overseas also, we had a few poets. Yes. Plus, caregivers, patients, Doctors. doctors, yes, primary caregivers, secondary caregivers who felt the pain, but when they wrote about hope, about positivity, about how they can fight this battle with a smile on their face. We have a member of ours who's dealing with this as a caregiver, and she's doing it very beautifully with a smile on her face, managing all other responsibilities, plus taking care of the person who is battling this disease. तो उम्मीदों का इंद्रधनुष, क्या इला आप इसमें और क्या ऐड करना चाहेंगी? ऐसा गुलदस्ता जिसकी एक एक फूल, एक एक पंखुड़ी उम्मीद जगाती है, उम्मीद का रास्ता दिखाती है, और नॉट ओनली फॉर कैंसर पेशेंट्स, जो भी उसको पढ़ता है, वो किसी भी दिक्कत से निकल रहा हो, उसकी एक एक कविता आपको बताती है, उम्मीद है तो जीवन है, और जीवन है तो ये सारी दुनिया है. और मदरहुड क्लब इज वेरी प्राउड टू से दैट हमने मिलकर जब ये बीड़ा उठाया था कि हम 101 कवियों को लेकर आएंगे, पहले लगा था 101 पोएट्स इज अ टॉल ऑर्डर, कैसे आएंगे, हमारे पास तो 30 ही पोएट्स थे. लेकिन हमें नहीं पता किन किन लोगों ने हमको अप्रोच किया उस टाइम पे, और बहुत जब उसकी एडिटिंग कर रहे थे, जब कंपाइलिंग कर रहे थे एक तौर में, और डॉक्टर इंदु बंसल, तब हमें लगा कि उम्मीद जैसी एक चीज, कहने को एक छोटा सा शब्द है उम्मीद, होप, बट कितने तरह तरह के एस्पेक्ट्स आए थे, कितने अलग अलग दृष्टिकोण आए थे, और कितनी पॉजिटिविटी उस एक काव्य संग्रह से आई थी. जितने भी बुक्स सेल हुए थे, उसका हमने कमिटमेंट किया हुआ था कि हम उससे किसी ऐसे कैंसर पेशेंट के इलाज के लिए देंगे जो हम्बल बैकग्राउंड्स को बिलोंग करते हैं. एंड वी आर वेरी ग्लैड दैट इवन बिफोर दैट हम लोगों ने कोशिश की है, जब जब जरूरत पड़ी है कैंसर पेशेंट्स के लिए फंड्स रेज करने के लिए, हमने कुछ मन में सोचा, एक निश्चय बनाया, और हमें समय समय पर वो पूरी जरूरत हो गई विद इन द गिवन टाइमलाइंस. सो थैंक यू टू ऑल मेंबर्स. और आज हम लोग फिर से आपके सामने एक अपील लेकर आए हैं. एकता विल टॉक अबाउट दैट फर्स्ट. Before we appeal to everyone, I'd like to mention, as Ila said, that those books were sold and we were able to help cancer patients from humble background. We, in all, I think, have sold 300 copies of our Yes. poetry anthology. And I think, if I remember it right, about close to 5 or 6 patients were helped. They were they were assessed. The validity, the sanctity, and the requirement was gauged, was checked. It was run past through with Dr. Bansal also. Most of the cases that okay, this patient definitely needs the treatment, and we feel extremely proud. And this is one place where we really went after quantity, because quantity was needed to raise the requisite amount to Yes. pay the person who needs it. So we once again come back to you and request you that create that hope for someone who needs it. And why are we asking or requesting you to purchase this book? I will be as open about it as I can. Purchase the book, it's priced at 250 rupees.
but your contribution helps someone overcome something that we call as financial toxicity. बीमारी, दवा ना मिलना तो बाद में किसी को मारती है, लेकिन जो पूरा घर-बार चला जाता है because of financial constraints, because we all know that the treatment is an expensive treatment. Lot of research is being done ताकि वो उसका आप कॉस्ट कम कर पाएँ, कुछ कर पाएँ, but still there is a cost and the treatment at times is long. Hence, it drains people out. I know people who have lost everything just because of this disease. घर, बार, पैसा, ज्वेलरी, everything gone. तो आपसे एक बस छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप ये किताब खरीदिए and believe me, when you will read these poems, they will not only help a cancer warrior, but anybody who feels low. I remember Ila's father saying that मैं कभी भी अगर डाउन होता हूँ, निराश होता हूँ, तो मैं ये किताब उठा के पढ़ता हूँ। तो ये मेरे वो लिए उसको भी गीता के एक बराबर मानते हैं। कहते हैं जैसे गीता रखती होती हो चाहिए, वैसे एक हर घर में उम्मीदों का इंद्रधनुष होनी चाहिए। ये मेरे पापा का तो कहना है। that is the power of this book. And I'm going to show you the book. If you look at the cover page also, you know, there are different emotions that will come to you when you look at this book. You will feel differently. This was designed by Dr. Bansal as to how life gets so entangled in all these challenges and these emotions. हम कैसे स्ट्रेस हो जाते हैं, सब हो जाता है। तो आप सबसे गुज़ारिश है कि प्लीज़ आप हमारी हेल्प कीजिए, ताकि हम और पेशेंट्स की हेल्प कर सकें। नॉट टू से कि हम चाहते हैं कि और पेशेंट्स बने, बट द वन्स हू आर देयर वी वांट टू हेल्प देम एंड वी अलोन कैन नॉट डू इट, वी नीड योर सपोर्ट। और मोनिका जी, आई विल कम टू दैट कि आप ये किताब कहाँ से खरीद सकते हैं। एंड ऑल्सो लास्ट ईयर वी रिमेंबर वी हैड स्टैंड अलोन बिफोर द बुक वाज लॉन्च, वी हैड रेज्ड फंड्स फॉर one of our members' house help. And we are so grateful to all those people who helped us raise funds, because we were able to actually raise a huge amount of money for that lady. So एक बार फिर से गुजारिश है, आपको ये किताब अगर खरीदनी है, आप ईला या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। We have the books. You can buy it from us, and all the proceeds that we collect from here goes to support a cancer patient or many cancer patients. So that's all that I would like to say. Anything, Ila, that you would like to add? बस ये जैसा एकता ने बोला, सबसे अपील है कि ना सिर्फ वो इस किताब को खरीदें, बाकी अपने मिलने-जुलने वालों को भी इसके बारे में बताएं। और अब मैं आज बोलूँगी ईच वन खींच वन। मेरा जो एक नारा है, ईच वन खींच वन। अगर हम में से सब एक-एक प्रति अपने लिए खरीदें और किसी एक को प्रेरित करें कि ये किताब खरीदो, ये काव्य संग्रह खरीदो, उम्मीदों का इंद्रधनुष खरीदो, तो देखिए किस तरीके से हम एक बड़ी संख्या में जरूरतमंदों की सहायता कर सकेंगे। हम लोगों के पास हर दिन, हर कुछ दिन में कोई ना कोई अपील आती है, जहाँ पे कई बार हमारे हाथ बंधे होते हैं। फिर भी हम कोशिश करते हैं और आप लोग सहयोग देते हैं। लेकिन चैलेंजेस हैं और हमें उनको सपोर्ट करना है। हाँ, सबको हमें वो मिलकर उम्मीद बना के रखनी है। इसे सपोर्ट करना है। यस। बिल्कुल। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, रविवार की शाम है, बस इतना ही कहना चाह रहे थे। और कल आप ज़रूर जुड़िएगा, कैंसर के बारे में जानने के लिए, कैसे हम उससे बच सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसका जो भी है। एंड हमारे कुछ मेंबर्स ने लास्ट ईयर बल्क में बुक्स खरीदी थी और उन्होंने अपने जानने वालों को हॉस्पिटल्स में इसको गिफ्ट भी किया था। उनका नाम नहीं लूँगी जिन्होंने बहुत दिल खोल के सपोर्ट किया था, बट वो जो भी हैं वो जानते हैं और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप जैसे और कई लोग सामने आएँगे और मदद करेंगे इस किताब को लेने के लिए। तो let's all create hope, create positivity, as it is month of February is when spring comes in.
New beginnings is what we look at, whether transition happening. How about making a difference in someone's life? तो उम्मीद करते हैं कि अभी के लिए 7-8 लोग सुन रहे हैं। बाकी लोग इसे बाद में सुनेंगे, देखेंगे या आप अगर किसी से बात करते हैं, your ₹250 contribution can make a difference in the life of many. If each one of Yes. us comes forward and buys these books, whatever, 1, 2, 5, 10, however, whatever may be possible, you will drop that extra drop in that ocean that is needed to help someone. Yes, come forward and make a change. Very right, Mukesh ji. आप सबके कमेंट्स हम नहीं पढ़ रहे हैं बिकॉज़ वी रियली वांटेड टू बी अ वेरी फोकस्ड कन्वर्सेशन जो एकदम से दिख रहे हैं। थैंक यू किरण जी। Either Ela or I will get in touch with you. Thank you for coming forward that you will buy this book. So please share it. We will also share a post here. And in fact, our Antarman newsletter till the month of October was carrying our appeal, and we request everyone. So thank you everybody and have a great evening. उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलके वो उम्मीदों का इंद्रधनुष फिर से बना पाएंगे। अब कल बिल्कुल मुलाकात बनेगा। करेंगे शाम को यस। 5 बजे जहां ईला डॉक्टर इंदु बंसल से बातचीत करेंगी और हम सबकी नॉलेज को बढ़ाएंगी इस विषय के बारे में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। बाय शुक्रिया, बाय सभी एवरीवन। अपना ध्यान रखिए। हैव अ हैप्पी संडे। थैंक यू। बाय बाय।